Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials. Where in this video, I'm going to give you your secret tips, mantras, and my final advice to you guys as to how you have to approach your tomorrow's question paper. Okay, so as you can see, I've written the roadmap to 80 on 80 and time management. First of all, आप जान लीजिए कि लिटरेचर पेपर इज नॉट लाइक योर लैंग्वेज पेपर एंड लिटरेचर में स्टूडेंट्स डू एंड अप गेटिंग अ perfect 80 on 80 or even 100 on 100. Now, it totally depends on how you approach your paper and how well you have written your answers. First of all, you need to know one thing is that this is not your paper one. Teachers of English, they do not give very much importance to your sentence construction or your grammatical error. So even if you are making spelling errors or grammatical errors, or there is a problem in the construction with the sentences, that's okay. As long as you have been honest to the text and you have been able to incorporate the textual reference and the appropriate content which is required for your answers to the question which is given, you will get a perfect 10 on 10 and a 5 on 5 in your answers. What are the things that you need to remember? I'll just discuss. Now, tomorrow when you get your question paper, एंड विथ योर फर्स्ट 15 मिनट ऑफ द रीडिंग टाइम, सबसे पहले आप सेक्शन बी में जाके क्वेश्चंस देख लीजिएगा कि क्या आया है. मेक योर चॉइस विथ योर 10 मार्कर क्वेश्चन दैट विच क्वेश्चन आर यू वांटिंग टू अटेम्प्ट. उसके बाद टेक जस्ट अबाउट से 2.5 minutes फॉर making your choice and then come back to section A and read the MCQs and give reason questions properly. समझिए कि MCQ क्या पूछा है. Obviously, you just cannot scribble on your answer paper, on your question paper. Do not do so. अगर आप पकड़े गए तो फिर शायद आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया जाएगा. So be aware about that. And once जब आप क्वेश्चन रीड करना शुरू कर दोगे, the moment you've started reading your questions, आप अपने मन में ही आंसर सोच लीजिए. Just think about the answer, what you have to write, and keep it in your mind for the other 10-12 minutes while you are reading that question. Now, the moment your writing time begins, my advice to you would be you should start attempting your section A first. I'll tell you why. Now, see, this is a secret tip जो आपको कोई नहीं बताएगा. MCQ में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो लाइंस आते हैं जिसका आप आंसर चूज करोगे, आप उसको अपने 5 मार्क या 10 मार्क के आंसर में उस लाइन को इस्तेमाल भी तो कर सकते हो ना, इफ इट इज एसोसिएटेड विद दैट क्वेश्चन. अगर वो उसमें आया है तो फिर आप उसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हो. सेम गोज फॉर द गिव रीजन पार्ट के जब गिव रीजन के लिए आप बिकॉज वट एवर आंसर यू विल राइट, you can use that content to incorporate in your 5 marker or 10 marker question. And that is why I advise my children to start with section A and use that matter in case if there is a particular question asked in which you can borrow those lines which have been given in your MCQ portion or a give reason portion. तो आप ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है. एंड रिमेंबर द टाइम दैट यू आर सपोज टू टेक अप फॉर योर सेक्शन ए इज नॉट मोर देन 20 to 25 minutes एट द मैक्स. कितना टाइम लगेगा आपको एमसीक्यू, आप तो ऑलरेडी रीडिंग टाइम में सिलेक्ट कर चुके होंगे आपका एमसीक्यू का आंसर्स, तो यू शुडंट बी टेकिंग मोर देन 3 to 4 minutes फॉर राइटिंग योर आंसर्स, योर ऑप्शंस. एंड उसके बाद तुरंत आप गिव रीजन में जाइए, वहां भले आप 1-1.5 मिनट एक गिव रीजन को दीजिए, दैट वर्क्स. But then do not write 5 to 6 lines for a give reason. Try to be very specific as to what the question is asking you for from the question paper point of view. Okay. And then you come down to your section B part. Now आपको जिससे शुरू करना है वो आपकी मर्जी है. But just remember one thing, it should not be like you have started with Rhapsody and without completing it in full, मैंने एक 5 मार्कर रैप्सडी से कर लिया, फिर मैं 10 मार्क्स का जाके प्रिज्म कर लूंगा, फिर मैं वापस से 10 मार्क का मैकबेथ करके देन 5 मार्क का वापस से रैप्सडी में आके उसको. नो, डोंट डू लाइक दैट. Rather, when you have taken up one portion, if you started with Rhapsody, you finish it up, both the 5 marker question and the 10 marks question, and then you go to the next thing. उसमें आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप पहले मैकबेथ नहीं करके पहले रैप्सडी कर लेते हो या फिर पहले प्रिज्म कर लेते हो. इट्स टोटली अपॉन योर ओन डिस्क्रिप्शन आपको कैसे करना है, ठीक है. बट उसको पहले कंप्लीट करके फिर चल जाइएगा. एंड इफ यू फील कि
आपको याद नहीं आ रहा है कोई पर्टिकुलर आंसर, you leave out a page or so or a page and a half depending upon the question and then move ahead. Finish up the other questions and then come back to the other question which you had left out and complete it. ठीक है? So for 5 marker question, you are not supposed to take them more than 10 minutes per question. Please अपना नजर घड़ी के साथ भी रखिएगा, देखते रहिएगा टाइम को कि कितना हो रहा है. 1 घंटे के अंदर करीबन आपका in total, I think 6 questions will come of 5 mark, which will have 2 questions from Macbeth, 2 from Rhapsody, and 2 from Prism. So 60 minutes से ज्यादा कोशिश मत करिएगा. 5 minute, 10 minute here and there, it works. उतना चलता है, उससे ज्यादा नहीं. Do not stretch beyond that. Coming to the 10 marker question, again you would have to do 3 10 marker question. Do not attempt extra question, do not waste your time. Rather, make the question which you have decided to attempt the perfect in its possible way. ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको करना होगा 10 मार्क का. यू शुडंट बी टेकिंग मोर देन 20 minutes maybe to do per question at the max. I think roughly बच्चे लोग का 15 minutes to 18 minutes के अंदर में कंप्लीट हो जाता है, बट स्टिल यू कैन टेक अप 20 to 22 minutes. उससे ज्यादा खुद को मत ड्रैग करिएगा, ठीक है. एंड बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल. आई डू नॉट नो मैं कितना बार इस चीज के लिए कितना एम्फसाइज करूं इस बात पे कि डू नॉट राइट ब्लेटेंट समरी. जस्ट अंडरस्टैंड. आप अगर आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आप पहले अपना एक बुलेट पॉइंट्स, की पॉइंट्स बना लीजिए एंड देन ट्राई टू फ्रेम योर आंसर अराउंड दैट. Make sure to incorporate quotation. I'm not saying the entire line or the paragraph in terms of quotation, but 2 words, 3 words here and there, if you can quote in the quotation mark and maybe try to build around that, it will elevate your answers when you are writing. Okay, so remember that thing. And along with that, make sure to underline the keywords, because if you do not underline the keywords, then teacher will tend to read everything, and the moment they read everything, they will find your mistakes and marks will be deducted. So make sure you just underline the keyword which you feel that is question ke hisab se these are the keywords in my opinion which is important. You underline it, teacher ka nazar padega and automatically they will award you full marks by marking those keywords. ठीक है, so इस बात का ध्यान रखिए. And I think with this we are good to go. I hope you are having a great time preparing for your examination and all the very best. My best wishes are with you all. Take care, bye bye. Do not worry, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है. I'm sure about that. Tomorrow when I come up with the answer key, I want to hear that sir, भैया, my paper really went well. ठीक है, take care, have a good time preparing for your examination. Bye bye.